I had this young man who would invite me on Facebook and tell me, I want you to come to Pakistan. And because I didn't want to go, I kept telling him I'll come sometime in the future. 2013, around February, he told me, now you must, he used the word, you must come. I asked, why must I come? He said, we have a conference in Gujranwala, and we had invited the American team. They can't come, they were all denied visa. The meeting is going to be there, and you are the main speaker. We will be the host monitors. So I looked for somebody who had faith like me. I found one in Apostle Titus Keange. I told Apostle Titus, and we're praying for him. The dad passed on this week. We pray for comfort of our pastor, Apostle Titus Keange, in Jesus' name. You amen. Somebody say amen. Amen. So I told him, we have this invitation. Can we go? He said, yes, we can. Why not? He told one of his friends, we want to go to Pakistan. The man asked, why must you go to such a country? He said, I'm going to give you money, but I can't go myself. So it was in April. We organized ourselves, flew Nairobi, Karachi, and then I think we did 2 days in Karachi. I don't think I met Javed at that particular time. Then from there we flew to a place called Lahore. Then from Lahore went to Gujranwala, and lo and behold, Pastor Javed just came in. Now he came in as interpreter because they needed a more polished interpreter for these international guests. And Pastor Javed, if you are not aware, is one of the most celebrated interpreters in the country. And so in the afternoon, I'll show you pictures of me and him and see how mighty and blessed we were. We were 2.5 GB subtract 1.8 GB. You're in my back is what we were, by the grace of God. So he came in and interpreted. We became friends. We talked. And before we left the country, we agreed to introduce me to more of his friends. He introduced me to Pastor Ferdinand Concebido in Dulag, Philippines, because he did his studies there. So that's how later on I was able to go there. 2017, we went back to Pakistan, and then he came with Yusuf, came with Samuel Kokar, he's come with quite a number of people. I'm trying to get the names. And this time around, by the grace of God, he is back here. Now, you remember during Zoe, we were receiving 5 ministers, and only 3 arrived because of the challenges. So Adnan was able to come, and Pastor Javed was able to come, together with Rafiq. Rafiq, which also means Rafiki, means a friend. They were able to come, but our man of God, Rahmat, was not able to come, and a brother called Norman, who is a brother to Adnan, was not able to come. And so we agreed with Javed, God giving us grace, that they would come in the next portion of the year, and God allowed them to come this particular season. Now they came 4 of them. One of our brother, Pastor Akhtar, was here and had to go back on Wednesday because he had to do a couple of things. Sasa nitaweka password kwa sababu yenu, Wakenya wenzangu. Kwa sababu ya mazoea kuwa na wageni wengi katika taifa letu, Mungu anaweza kutuletea wageni wa heshima sana na tukose kuelewa kwa sababu tumezoea. Tumezoea wageni na sisemi uzima, nasema Kenya. Kwa hivyo ningependa kuomba Bwana anapotutumia watumishi wake, whether wao ni tajika kwao sio tajika, tafadhali wapokee kwa heshima na katika jina la Yesu. Na moja wapo ya heshima kumpokea mtumishi sio tu kuinama, lakini kulifuata neno alilolisema na kuliweka kwa moyo wako na kulifanya. So I was saying we are very happy to have you around. And we bless the Lord. So Javed, of course, is our friend. He's been here many times. He came with the 2. Now, let me say something about our pastor, Rahmat. As you can see, he's a senior, he's a father. In their country, he's a father. He's been in ministry for 40 plus years. Now, if you know what 40 plus means, you ask Patience how old you are, and you are likely to find 40 is not a small deal. Are we together? And he's been ministry there. He has his own church. But he also runs an interdenominational meeting for the city of Karachi. And they meet in a church right in the middle of the city. It's called, in this church, the Salvation Army. And we were privileged to preach there. In April, they gather 500, 600 or more people every Thursday. So tumebarikiwa sana kuwa na umze. Sasa tunahubiriwa na lugha ile ya Urdu na tunainterpretiwa na tunabarikiwa.
Wewe sasa kwa sababu uko na Roho Mtakatifu unashikanisha English, maana sio rahisi sana kutafsiri kutoka ile lugha ukirudi kwa Kiingereza, kama vile si rahisi kutafsiri kutoka kwa Kiswahili ukienda Kiingereza. Na kama ni rahisi, ambia jirani yako mazingaombwe kwa Kiingereza ni nini. Tell your neighbor, what is mazingaombwe? What is mazingaombwe in English? What is mazingaombwe? Mazing cow. Zinc cow, is it? So we bless the Lord. So I want to ask us with the joy of the Lord to bring Pastor Javed, and he will guide us, and in Jesus' mighty name. Put your hands together. Hiyo makofi haitoshi wapendwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you happy? Praise the Lord. I'm really very happy to be back here. Amen. I have learned something, some words I want to tell you. May I? I have learned Sister Evelyn's language word, my mahiyo. Yeah. Then I learned last night one word, samama. Samama. Pole. Pole also I learned. We went for polo. We went for to say pole. Sorry, went to say pole. Pole. Then baridi. Maji baridi. And maji moto. Praise the Lord. I'm believing that soon I'll learn many words. You know Adnan. How many know Adnan? Last time he was here. Okay, let's call him to say hi to you. And he's a wonderful man. Wonderful heart God has given him. Please, Adnan, come. Yeah, you can sit. Praise the Lord. It's good to be here this afternoon. It's going to be afternoon now. So we bless the name of the Lord. Sorry, I have a bad throat because the weather in Rongai didn't suit me well. So when we were coming here to Nairobi, I had a flu and bad throat, but still I'm grateful to God that He's keeping us, He's giving us the strength to move, and God is awesome. Amen. So my name is Adnan. For those who don't know me, let me give a brief introduction about myself. My name is Adnan, and I come from a city of Pakistan called Hyderabad, and I am involved in outreach ministry. We travel in different villages of our region, preach the gospel to the unreached people, and do worship along with them, and win souls for Christ, because that's what we are called to do. And I'm so overwhelmed, I'm so excited, I'm so blessed that the Lord has allowed me to go and do missions outside our nation as well. So I'm so grateful to our Lord Jesus. Let's appreciate the Lord. Yes, let's appreciate the Lord Jesus Christ for this opportunity. Amen. So I'm also grateful to my friend and brother Pastor Javed that he allowed me to come with him, and this is my first time doing mission trip outside our country, my first international mission trip, and it is in Kenya and Nairobi. So you can guess from that how special Kenya is for me. So it feels like back home when we were coming here in Nairobi. So it didn't feel like we are going in another town and another city. It was feeling as we are coming back home. So to be received by Pastor Jeff and Pastor Evelyn and Pastor Lucy is here as well. We are so excited. So it's good to see you. And when we were worshiping, when we were praising the Lord, and
as we are in good numbers today, there was a prayer that was coming out of my heart that may these number never reduce, but it keep on increasing in the mighty name of Jesus Christ. So I was just praying in my spirit, and I believe that the Lord has my prayer. Amen. Can we say amen? Amen. So we were in Meru. We went on Friday and we had a conference there, and I was able to teach them a praise shout in our language, in Urdu language, and it was Jesus is King. Yesu Basha hai. And Pastor Jeff can tell you that they did very well. And I'm not going to do the same here, but do the same here. So I want you to give a shout of hallelujah, but no, Pastor Jeff is saying we can do the same here as well. So let's have a little bit of, competition that Meru people did well or the Nairobi people are going to say it aloud. So are we ready, church? So you got to say after me, Yesu, Bacha hai. Yesu, Bacha hai. It means Jesus is King. Amen. So I'm going to say first and then you are going to say after me. So let's see how we do it. Yesu Basha hai. They are trying. So let's give it another try. Yesu Basha hai. They need more exercise. More practice. Yesu Basha hai. Can we all just lift our hands as we are victorious people through Jesus Christ, because He has paid the price. He is risen. He is no more in the grave. His grave is empty. So we are victorious in His name. So let's give it a shout and praise our Lord Jesus Christ, who has beaten the death and grave. So let's say, Yesu Basha hai. Yesu Basha hai. Yesu Basha hai. Amen and amen. Thank you so much, church. We can appreciate the Lord Jesus Christ. So now the Nairobi people are also coming to know Urdu, as we are coming to learn many words in Swahili. Majimoto, Mahendi, Buana Safiri, Jambo, and there's so many of them. So we bless the name of the Lord. Thank you so much. So Pastor Javed, thank you. Praise the Lord. Let us twin day hear the word. I would like to call Pastor Rahmat, a mighty man of God. He is really a blessing to Pakistan. Really, God has blessed him a lot. We praise the Lord for his heart. Amen. Please be seated. Yeah. मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ. I'm really very happy after being here. मेरी तरफ से, मेरे चर्च की तरफ से आप सबको सलाम. Greetings to you all from myself and from my church and family. मुझे आपके I love your food. मेरा दिल करता है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो मैं यही खाना खाया करूं. And I wish when I go Pakistan, I go back to Pakistan, I eat same kind of food there. क्योंकि मेरी जो पैंट है ये थोड़ी ढीली हो गई है. My pant, I have loosened my weight here, ओ, and my pants are now loose. तो मैंने सोचा कि ये अपने वेट को कम करने का बड़ा अच्छा खाना है. And I felt that this is very hygienic food and very good food and healthy one. तो आपकी प्रस्तुति बड़ी अच्छी है. I love the way you worship. जब ये बेटियां प्रस्तुति कर रही थी, When these daughters and the sons were worshiping,
मुझे अपने बच्चे भी याद आ रहे थे, I was recalling my own children, तो मेरा दिल कर रहा था इन बच्चों को साथ ले जाओ. and my heart, I was thinking in my heart that take them to Pakistan, और ये बच्चे वहाँ प्रस्तुत करे जाकर. and when they worship there in Pakistan, मैं पास्टर जेफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, I'm really very thankful to Pastor Jeff, पास्टर Evelyn, एडविन का मैं शुक्रगुजार हूँ. and we are thankful to और Pastor बड़ी Evelyn. एनर्जी है इनके लिए. God has given her a lot of energy, ओ बड़ा पावरफुल बंदा है. and he is a mighty man of God. God has given him power, और anointing, पाकिस्तान में इसको खुदा ने बड़ा इस्तेमाल किया है. and God, people love him in Pakistan, and God is using him there in Pakistan. कल हमें सिस्टर लूसी ने बड़ा घुमाया है. And yesterday, Sister Lucy had been with us, and she took us far places. हम इनके भी शुक्रगुजार हैं. We are also thankful to her. हम आप सबके शुक्रगुजार हैं. We are thankful to you all. मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ I was filled with the Holy Spirit, और मैं ईमान रखता हूं कि आज खुदा अब बहुत काम करने वाला है. and I'm believing today that God will do great works today. अगर आप संजीदगी से खुदा का कलाम सुनेंगे, If you just hear the word of God seriously, खुदा बड़ा काम करेगा. God will do mighty works for you. खुदा इतने बड़े बड़े काम करता है God can do mighty works. जिनके लिए हम सोच नहीं सकते थे. We can never think about those things. मैं एक दिन चर्च में कलाम सुना रहा था. And one day I was in my church and I was preaching there, एक बड़ी टीम जो है वो दाखिल हुई चर्च में. and I saw a big number of people, the team, they came in the church, वो सारे रो रहे थे. and they were all crying, वो बहुत जोर जोर से चीख रहे थे. and they were crying and shouting tears, और उनके हाथ पे एक बच्चा था. and they were holding a child in their hand. और मुझे नहीं पता था. मैं सोच रहा था कि इस माँ का बच्चा बीमार है इसलिए ये चीख रही है. And I didn't know what happened to that child. I was thinking that the son or the child is sick, that's why mother is crying. और वो सारे ही रो रहे थे. They all were crying, मैंने अपने कलाम को रोक दिया and I stopped preaching. और मैंने उनको आगे बुलाया. I called them, come forward. मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया. I hold that child in my arms. वो 1 साल का बच्चा था. He was 1 year child. जब वो बच्चा मैंने गोद में उठाया, चूंकि वो सारे रो रहे थे तो मैं भी उनके साथ रोने लगा. And when I hold that child in my arms, because they all were crying, I also started crying. तो मेरे आंसू उस बच्चे पर गिरे. And my tears fell on that child. मैंने आंखें खोली I opened eyes, तो बच्चे ने भी आंखें खोली. and the child also opened his eyes. वो जब उन्होंने वो मैंने उनको बच्चे को उनके हाथ में दिया When I gave that child back to the mother, तो उन्होंने कहा कि हम तो हॉस्पिटल से आए हैं. they told me that they had come straight from hospital, और ये हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है. and they have death certificate from the ये बच्चा hospital. मर गया था. This boy was died, he was dead. और लेकिन मुझे पता होता तो शायद मैं ना दुआ मैं कुछ खामोश हो जाता. If I knew this, that then I would have another kind of situation. लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है मैं बच्चे की डेथ हो गई है. I didn't know that child was died. और लेकिन जब दुआ की But when we prayed, और वो बच्चा जिंदा हो गया. the child raised. खुदा आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है. God can do anything in your life. इसलिए आज का कलाम गौर से सुनिए. That's why listen the word of God very clearly. And आज very हम आप seriously. सबके लिए दुआ भी करेंगे. And we will pray for you today. और जब मैं अगली दफा आऊंगा आपका मुंह गवाहियों से भरा हुआ And होगा. when I will come next time, there will be many testimonies from you. क्योंकि खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है. Because God does great things. इन दिनों में In these days, हम कुछ खुदा के कलाम का हिस्सा सीख रहे हैं. we are reading from the word of God and learning on our theme verse. अब्रानियों 12वां बाब It's Hebrew
chapter 12. Hebrews chapter 12. हमने इस पर 2 पैगामात सीखे हैं। And we have learned 2 sermons on this. पहली 3 आयत पढ़ लीजिए। Let's read first 3 verses. Hebrews chapter 12, and we read from verse 1, 2, 3, King James Version. Let's see. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Amen. आमीन। Amen. इन दिनों में हम इस बात पर खुदा का कलाम सीख रहे हैं Now- कि मसीह को तकते रहो। We are learning nowadays up from the word of God that looking upon Jesus. आप चूंकि आप में से सारे यहाँ मौजूद नहीं थे, And because you all were not here, तो मैं चंद पहली बातें करना चाहता हूं। I will just remind few things. I will recall them. ये लेटर जब लिखा गया When this letter was written, तो वो 4 ग्रुप्स थे वहां पर, उनको ये लेटर लिखा this गया। letter was written to 4 people group in that time. पहला ग्रुप था जो मसीही यहूदियों का ग्रुप था, The first people group was Christian Jews. जो रसूमात भी अदा करना चाहते थे और मसीह पर भी ईमान रखते थे। They wanted to do their rituals also, and they also wanted to have faith in Christ. तो ये लेटर इसलिए भी लिखा गया कि आप सिर्फ मसीह पर ईमान रखें। And the reason why this letter was written, to tell them that have faith only in Jesus. फिर ये लेटर उनको भी लिखा गया जो मसीह में नजात तो पा गए थे लेकिन वो बढ़ नहीं रहे थे। And this letter was also written to those who they had received Jesus, but they were not growing in Christ. तो ये मसला आज भी चर्चेस में है। This kind of problem we still see in churches. चर्च में लोग आते हैं, People come to church, वो वर्शिप करते हैं, they worship in the church, वो कलाम पढ़ते हैं, they also read the word, लेकिन उनकी तरक्की नहीं होती। but they don't grow spiritually. और लिखा भी हुआ है कि वक्त के एतबार से उन्हें उस्ताद होना चाहिए And था। that's why it is written that we should be teachers as the time is going. लेकिन अभी भी वो बच्चे हैं, But still they were children. वो रूहानी तौर पर बढ़ते नहीं हैं They were not growing spiritually. और खुदा का बंदा परेशान है, And the man of God is worried about them. इसलिए उसने उनको लेटर लिखा। That's why he wrote this letter to them. और तीसरी बात जो उनके लिए लिखा जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते थे। And the third thing, the third group, that's why it was written to them that they used to get worried or discouraged in very small things. पहले जब वो खुदा में आए थे उन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतें झेली थी। When they came into Christ, they had suffered, endured lots of problems, उन पर तशद्दुद हुआ, and they were beaten. लेकिन वो उस वक्त परेशान नहीं हुए थे। But that time they didn't get worried. लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ But वो छोटी छोटी बातों में परेशान हो But जाते। as the time passed, they started getting discouraged and worried about small things. तो चौथा ग्रुप वो था जो बरगश्ता हो गए थे। And the fourth people group is the people they were they got back, they slide Black back. They were वो- backsliders. ऐसे लोग भी हैं जो खुदावंद में शुरू करते हैं लेकिन फिर वो बरगश्ता हो जाते हैं। And there are many people, they start in Christ boldly, but then they backslide. फिर मसीह ने उनके लिए ये खुदा के खादिम ने उनके लिए ये कलाम किया And then the man of God wrote for them this.
उनके लिए ये कहा कि मसीह को तकते रहो, And that's why he said to them that keep looking Jesus. पीछे ना चले जाओ। Don't go back. इसलिए आज भी मैं कहना चाहता हूं, That's why I want to tell you today. अगर कोई कमजोर हो गया है, If somebody has gone back or backslided, तो वो वापस आ जाए, he can come back to him फिर वो मसीह को तकना शुरू and करे। start looking upon Jesus again. फिर हमने 3 बातें देखी पिछले दिनों में। And we learn about 3 things from these verses. हमने कैसे तकना है, हमने पहली बात देखी We कि learn हम that how we should look upon Jesus, पीछे की तरफ देखें। that we look back उन गवाहों का बहुत बड़ा बादल, and look back to the witnesses of crowd, that cloud of witnesses that has surrounded us. वो 11वें बाब में मौजूद है। And the cloud of witnesses is in chapter 11. Hebrews तो chapter उनमें 11. हमने कई लोगों को देखा जिनके ईमान पर हम चलकर, हम देखकर हम मजबूत हो सकते हैं। And we learn from their lives and through them that how we can grow our faith through their lives. फिर हमने देखा ना सिर्फ पीछे की तरफ देखना है, हमने देखा कि हमने आगे की तरफ देखना Then है। we also learn this, that we don't just look back, look before also. इसलिए जिस तरह मसीह ने उस खुशी की खातर शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, As Jesus didn't feel shame of dying on cross because the joy he was looking at. जो मसीह के साथ क्या हुआ, What happened with Jesus? और उसके कपड़े उतार दिए गए। They torn his clothes और अब मैंने उस दिन बताया, and they what? मैंने उस दिन बताया था, And I told you that day और उस पर इतना थूका गया। that they spit on his face. मैंने एक किताब में पढ़ा, I read in a one book उस पर इतना थूका गया, that when he started his journey toward the वो mount, उसका सारा बदन वो थूक से भर गया था। everybody was on the way was spitting on his face, that whole his body was covered with the लेकिन spit. उसने उसकी परवाह नहीं की, But he didn't felt shame क्योंकि उसकी नजरें उस खुशी पर थी। because he was looking upon the joy that और was before आपने भी him. आगे देखना है, मुसीबतों को नहीं देखना। Don't look upon trials and troubles, look upon Jesus. कभी कभी आप शर्मिंदा हो सकते हैं, Many times things can come to bring shame on you, लेकिन आप मसीह को तकते रहे, आगे देखे उस खुशी की खातर जिस बारे में लिखा है कि इस दुनिया के दुख उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकते। and that's why you have to look before for the joy that these kind of the trials and troubles, they are nothing in front of the glory that we'll receive in Jesus. आमीन, आमीन। Amen. फिर हमने तीसरी बात ये देखी कि ऊपर की तरफ देखो। And then we learn that look above. जब कभी मुसीबत हो, Whenever you are fallen into problem, और हमेशा उसकी तरफ देखो, look upon him. हम उसकी तरफ देखो। Look upon him. और फिर हमने मूसा के बारे में एक लंबा लेक्चर पिछली दफा सुना, And we had heard about Moses. क्योंकि उसने भी उस चीज पर निगाह रखी, क्योंकि उसका जो है वो उसके अंदर अजर पाने को थी। Because in his present situation, he didn't try to be the son of the Pharaoh's daughter, but he was looking upon the reward in future. तो उसने भी निगाह जो है वो फ्यूचर पर रखी, His eyes were on the reward in future. और हमने वहां पर एक लंबा लेक्चर देखा। And we learned a lot of things from the life of फिर Moses. मैंने 2-3 चीजें बताई And I told few things कि ये जो लिखा हुआ है कि कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। that it is written that the perfecter of our faith. look कामिल का upon- क्या मतलब है? What is the meaning of perfecter? कामिल का क्या मतलब है? What is the meaning of perfect? ये बड़ी जरूरी बात है। This is very important. कामिल का मतलब ये है, The meaning of perfect is ऐसा लीडर the leader जो सिर्फ आपको ये नहीं कहता कि आप बादशाही में चले जाओ, he is not just telling you way or showing you way or telling you that go into the kingdom. वो आपको उसके साथ चीजें भी मुहैया करता है।
this kind of leader who is perfecter and finisher of your faith, he provides you things, provides you necessary thing that will take you to the kingdom. आमीन। ये लीडर दूसरे लीडरों से इसलिए मुख्तलिफ है, And this leader is different than other leaders. वो दूसरे लीडर सिर्फ कहेंगे उधर जाओ, The other leaders, they told that go to this direction, लेकिन वो कुछ देंगे नहीं। but they didn't give anything. वो ये लीडर कामिल लीडर है, And this leader is perfecter. वो and ये finisher. साथ साजो सामान देता है, He also gives you provision with that. इसलिए ये लीडर दूसरों से फर्क लीडर है। That's why this leader और is ये different हमारे than लिए others. बड़े फख्र की बात है। And this is really for us, this is a very good thing. ना सिर्फ कामिल बल्कि एक और लफ्ज यहां पर है, बानी, And number two thing ईमान is, का बानी। he is the author of the faith. इसका क्या मतलब है? सादा मतलब तो इसका है कि ये फाउंडर है, And another word meaning in the author means the लेकिन founder. इसका जो खास मतलब है वो ये है, And another the meaning of this word, very important meaning is, वो ये लीडर जो है ये आपको अपने साथ जो है वो पूरा सहारा देकर खुदा की बादशाही में दाखिल करेगा। and this leader will take you alongside with him and give you grace and take you into the kingdom of God. आप अकेले नहीं हैं, You are not alone, वो ऐसे जो है सफर में आपके साथ है। and he is with you in your journey. ये इसका मतलब है कि वो ईमान का बानी है, And it means that he is founder of the faith. और इसलिए ये हमें बड़े फख्र है। And that's why we have proud on him. और मैंने ये भी बताया कि हमें फख्र उस पर करना चाहिए क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं, And we should be proud of him because we are his sheep. और हम वो भेड़ें हैं जो उसके हाथ में हैं। And we are the sheep in his own hands. ओ कोई उसके हाथ से हमें छीन नहीं सकता। Nobody can snatch us from his hands. ओ आमीन, Amen. आमीन। Amen. आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। We will go further today. ये तो हमने पिछले लेक्चर देखे थे, We have just talked about what we learned in this during these days. लेकिन आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे Today we will go further. और आज हमने ये 3 चीजें देखी थी जो हौसला देती हैं। And we learned about 3 things that give you encouragement, courage. They make you strong. आज हम 4 चीजें देखेंगे। And today we will look upon 4 things. इसको कहते हैं जो है वो अमली चीजें। These are the things to work upon, that you act on them. हाँ, ये एक्शन है, These are acting things. You act on them. ये आपने अमल करना है इन पर। You have to work on these things. और पहली चीज क्या है? What is number 1? यसी कलाम में लिखा हुआ है, It is written here. बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, It is written that there is therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, तो आओ हम भी हर एक बोझ, let us lay aside every weight. तो पहली बात हर एक बोझ, The first thing is every weight. ये बोझ का क्या मतलब है? What is the meaning of weight? असल मतलब इसका वजन ही है, Its main meaning is, the real meaning is weight. लेकिन जब इसको ओरिजिनल में देखा जाए But when you go into the original text, तो वहां लिखा हुआ है कि ऐसा जो कोई मोटा हो जाता है। and in original it says that something that makes you fat. जब कोई मोटा हो जाता है When somebody becomes fat, वो बोझ हो जाता है। he becomes weighty. आपको पता है कि जब ये बदन मोटा हो जाता है You know, when this body grows or become fat, तो उसके लिए काफी चलना मुश्किल होता है, and it becomes very difficult to walk and dance and worship. तो ये बोझ है।
इसका मतलब है कि ऐसा शख्स जो मोटा हो गया है, It means the person who has become heavy, taken some weight. लेकिन आज मैं जिस्मानी मोटापे की बात नहीं करने लगा. But today I'm not talking about the physical, growing, the physical, you are growing in the body, weight. उसके बारे में भी कलाम कहता है, It's also word of God says about it. लेकिन आज हम फिजिकल जो है वो मोटापे के बारे में बात नहीं करेंगे. We will not today talk about the physical fitness. आज हम रूहानी मोटापे की बात करेंगे. Today we'll look upon when our spirit becomes weighty. कई दफा हमारी जो रूह है ये बहुत वजनी हो जाती है. Many times our spirit becomes weighty. इसलिए हम उससे तकने से रह जाते हैं. And that's why we not keep looking upon him. ये मोटापा क्या है? What is that weight? रूहानी मोटापा क्या है? What is spiritual weight some carry? उसमें बहुत सी बातें हैं, There are many things in it. लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा. I will just talk about one thing. जब हम किसी को माफ नहीं करते, When we don't forgive others, हमारी रूह में मोटी हो जाती है. and this is the burden, the weight our spirit carries. ऐसा शख्स कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता. This kind of person cannot be successful in his life, उसकी रूहानी जिंदगी रुक जाती है, and his spiritual life doesn't grow further क्योंकि उसकी रूह जो है वो मोटी हो गई है. because his spirit has grown fat, उसकी रूह जो है वो उसको वजन बढ़ गया है. because his spirit's weight has increased, उसका रूहानी तौर पर चलना अब मुश्किल हो गया है. and now it is difficult for him और to जब आपका दिल spiritually खराब हो walk. जाता है, You know, sometimes when you feel nausea or something like जब आपका दिल खराब हो जाता है, when your heart is not in good condition, ओ आप सुस्त हो जाते हैं. you become very lazy. ओ फिर आप ऐसे ऐसे चलते हैं. You walk very slow because ओ your फिर आप heart ऐसे ऐसे चलते हैं. doesn't work well. फिर चर्च आने को दिल नहीं करता. And then you don't come to church. और फिर कलाम पढ़ने को दिल नहीं Then you करता. don't want to read वो word. फिर आपका दुआ करने को दिल नहीं You करता. don't want to pray. वो फिर आप दिल करता है नहीं ऐसा नहीं करे, And your heart, because क्योंकि आपकी स्पिरिट वजनी हो गई है. because your spirit has become weighty. और बाइबल कहती है, And Bible tells us, ओ इस वजन को दूर करो. and that's why the Bible tells us that lay down that weight. इस वजन को दूर करो. Take away that weight. सिर्फ ये नहीं है कि हमारा दिल खराब हो तो हम वर्शिप करते रहें. It doesn't mean that if our heart is not well and we are worshipping. ये नहीं है कि हमारा दिल उसी तरह जो है वजनी हो और हम जो है वो कलाम भी सुनाते रहें. And you know, sometimes it doesn't mean that that our heart is not good and we are preaching the word also. इसीलिए बाइबल में लिखा है, That's why it is written. जब पतरस ने पूछा, When Peter asked, ओ मैं अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं किसी दफा उसको माफ when करूं. Peter asked, how many times should I forgive my brother if he और पतरस sins चूंकि against जज्बाती me? शख्स था, And Peter was, you know, Peter was इमोशनल, वेरी इमोशनल. emotional. He was very emotional person. ओ वो बहुत ज्यादा इमोशनल था. He was very emotional. ओ उसने कहा 7 बार. And in emotions he said, should I forgive 7 times? ओ उसके दिल में था मसीह मुझे शाबाश देगा. And he was thinking that Jesus will give me, that he will say, oh, you have done good. लेकिन मसीह ने उससे आगे की बात की. Jesus said something else. ओ उसने कहा 7 के 70 बार. Jesus said 7 into 70. और आपको पता है वहां लंबी एक कहानी बताई गई है. And there is a big story there, you know all. और आपको पता है कि वहां स्टोरी बताई गई कि एक शख्स ने किसी के पैसे देने थे. And you know this is story that one person, he had to give बहुत somebody the debt. A lot of money he had to give. और लेकिन उसने उसको माफ कर दिया. But the person who, he forgave that person. लेकिन जब उसने किसी से थोड़े पैसे लेने थे, But that person who was forgiven, he had to take a small amount of money from somebody.
वो उसने उसके जाके गला पकड़ लिया। And he just grabbed him from his collar and dragged him. फिर मसीह ने क्या कहा? And what did Jesus say? उसने कहा इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो, इसको वो जो है वो रोना और दांतों का पीसना है। And Jesus said that put him into the dungeon, into the prison, in the darkness. छोटी सी बात जो है Very small thing. आपकी तरक्की को रोक देती है, It can stop your success. आपकी रूह को वजनी कर देती है। It can make your spirit weighty. आपने अगर कलाम को गौर से पढ़ा है, If you read the word of God carefully, पुराना अहदनामा हमारे सारे बाहर की आउटसाइडर की बात करता है, इसे पाक करो, ऐसे नहाना है, ऐसे करना है, ऐसे जाना है। Old Testament tell us about the body. Wash it, cleanse it, make it like this, go like this, work like this. लेकिन मसीह ने ये कहा इनर साइड। But Jesus in New Testament talked about washing of our spirit. ओ स्पिरिट, हमारी Spirit. रूह जो है वो अंदर से कैसी है? What kind of spirit we have from हमारा outside? हमारा आउटसाइडर किसी तरह का भी नजर आता है, Whatever we are looking from outside, like whatever our appearance is, वो कितना ब्यूटीफुल है, कितना खराब है, either इससे we कोई are फर्क नहीं पड़ता। beautiful or we are not beautiful, it doesn't matter. ओ खुदा की निगाह दिल पर होती है। God looks upon our hearts. आपको पता है मसीह ने कहा, यहूदियों से कहा, रबियों से कहा कि तुम रकाबी को ऊपर से साफ करते हो लेकिन अंदर तुम्हारे लूट और माल है। And you know, Jesus said to the Pharisees and to the laws, who were following the laws, they said, you clean the pot from outside, but the inside there is wickedness or things that are stinking. मैं आज आपको कहना चाहता हूं, Today I want to tell you, अगर आप खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं if you want to grow in तो Christ, आपका अंदर ठीक होना चाहिए। make your inner self clean. ओ ये ठीक होना चाहिए, Make your heart clean. ये ठीक होना चाहिए, Wash it, take, Make ये it- ठीक होना चाहिए। make it correct. और मसीह ने कहा भी, And Jesus said, बल्कि खुदा ने ये फरमाया God said this. कि इंसान के चेहरे को देखता है। God said that the man looks upon जब the हम appearance. हम दूसरों को खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, You know, when we want to be looked beautiful or handsome or smart to others. कल मैं जब शादी में था, पीटर की शादी में, When I was in Peter's wedding yesterday, और मुझे सब लोग बड़े अच्छे लग रहे थे, वो तैयार हुए थे। I was looking upon them. They were very looking good because they got dressed. और छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे लग रहे थे। Small children were very happy. ओ and उनके good. जो बाल हैं वो बड़े खूबसूरत थे, They had made good their hair. क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझे बाहर से अच्छे लग रहे थे। Because I'm human being, I'm looking appearance. ओ खुदा कहाँ देखता है? But God doesn't look upon appearance. ओ खुदावंद हमारे दिल को देखता है। God looks upon our heart. क्या हमारा दिल जो है वो पाक है? Is our heart clean? ये किसी चीज से वजनी तो नहीं हो गया? Is our heart heavy with something? अगर ये वजनी हो जाए, If it is heavy, किसी भी चीज से वजनी हो if जाए। it is heavy with anything, मैंने एक खादिम की किताब पढ़ी, I read the book of one man of God. वो अपनी किताब में ये लिखता है, He writes in his book, वो कहता है कि मैंने एक दिन अपनी बीवी को देखा, he said, one day I saw my wife वो उसका किरदार अच्छा बना लगा, and I didn't like her character. मेरा दिल सख्त हो गया, My heart became stiff. मुझसे कलाम खत्म हो गया, And God took away the word of God from him. वो मुझसे दुआ नहीं होती थी, And he said that I could not pray. मेरी खुशी चली गई। My joy left me. काफी महीने गुजर गए, After many months, मेरा चर्च कमजोर होता गया। my church started growing weaker. कहते एक रात मैंने क्या देख रहा हूं, He said, one night I was just looking. मैंने एक ख्वाब देखा I saw a dream कि एक शख्स है,
that there is one person वो एक पत्थर रखता है that he has put one stone somewhere और वो पत्थर रखता जाता है and he's putting stones upon stone there, और फिर वो पत्थर दिल बन गया है and then that stone became the heart. और उसने कहा ये आपका दिल है And then that person said, this is your heart that has become stone, hard like stone. फिर खुदा ने मेरे साथ कलाम किया And the man of God says that then God spoke to me, अपनी बीवी को माफ कर दे forgive your wife. उसको बता Tell her ये आपका किरदार अच्छा नहीं है that your character is not good. और तू उसे माफ कर दे And you just forgive her. और उसने उसको माफ कर दिया And he forgave her. और फिर बहाली आ गई And then God restored him. और फिर चर्च बहाल होने And then लगा the church was restored. फिर चर्च बहाल होने Then the लगा church was restored. मैं आपको कहना चाहता I हूँ want to tell you, अगर आपकी रूह वजनी हो गई है if your spirit is heavy, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है if it can be your friend, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है it can be your neighbor, आप जहाँ काम करते हैं आपका कोई कंपेनियन हो सकता है it can be your co-worker, where you are और working. उसकी बातों से आपके दिल में कोई बात लगी है You may be hurt by someone. और उसकी बातों से आप हर्ट हुए हैं You may be hurt by his words. और उसको माफ कर दे Forgive him. खुदा आपको बहाल कर God देगा will restore you. खुदा आपको बहाल कर God देगा will restore you. खुदा आपको बहाल कर God will देगा restore you. आपका वजन जाता रहेगा And your heaviness, ओ आप जो है will रिलैक्स leave हो you. जाएंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे and you will be relaxed. कितने रिलैक्स होना चाहते हैं How many of you want to ओ be अपने relaxed? दिलों से ऐसी बातें निकाल दे Take away this whole burden from your life. कभी कभी हम किसी जो है वो किसी फख्र का जो है वो बायस होते हैं Many times we have a pride in our heart. मैं जब शुरू में खुदावंद ने मुझे चुना When in the beginning God chose me, तो मुझ पर बड़ी हैवी अनाइंटिंग रहती थी and I used to have a heavy anointing in my life. मैं बता रहा था सिस्टर लूसी को I was telling to Sister Lucy, और मेरे साथ कोई हाथ नहीं मिला सकता था nobody could shake hand with me. क्योंकि वो हाथ मिलाता था वो गिर जाता था They used to fall down when they used to come near me. क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में रोजे बड़े रखे हैं Because I used to fast a lot. मेरे सेमिनरी के स्टूडेंट कहते थे आपने मर जाना है And the seminarians who were studying with me, they used to say, you will die because of क्योंकि आप रोजे fasting बड़े a lot. रखते हैं You fast a lot. वो मेरे पर बड़ी हैवी नेटिंग And there was heavy anointing of God. लेकिन मेरी जिंदगी onto में me. एक कमजोरी थी But there was one thing that was weakness in my life. क्योंकि मुझे अर्ली स्टेज में ये बरकत मिल गई Because in my very early ministry, I had gotten this blessing. लोग खादमों से दुआ नहीं कराते थे मेरे स्टूडेंट से होते हुए मुझसे दुआ करवाते थे People used to not go to the pastors because I was student even. They used to come to me for prayers of healing and deliverance. And I became proud. मैं कोई बड़ा And I used to think I have become something. एक दिन ऐसा हुआ And one day it happened. वो एक शख्स ने कलाम सुनाया One person was preaching. उसने कलाम सुनाया He preached. किसी ने मुझसे पूछा कैसा कलाम था And somebody asked me, how was the word और today? मैंने उसको मजाक में बात की And I just joked upon that. फिर क्या हुआ What मुझसे happened? खुदा का रूह पीछे चला गया The Holy Spirit left me. मैंने लोगों के लिए दुआ करनी I used to pray for people. वो कुछ भी नहीं होना Nothing used to वो happen. ना कोई गिरेगा Nobody was falling वो down. कुछ भी Nobody ना was हो healing. कुछ भी ना हो Nothing was वो happening. मैं रोने लगा खुदा की I जोरी में cried in the खुदावन presence ये of क्या God. है God, what has happened? खुदावन ये क्या है What has happened? वो मसा किधर चला गया है Where is that वो anointing? अनाइंटिंग किधर चली गई Where है is that anointing? ओ खुदा ने मुझे कहा And तू God- दूसरों को हकीर जानता है God spoke to me, you are looking upon people down. कभी कभी हमारी रूह इससे जो है बोझ हमारी रूह में होता है Sometimes this kind of weight our spirit carries. अगर आप उसको तकना चाहते हैं If you want to look upon Jesus, और इस बोझ को दूर कर दे remove this weight. इस बोझ को दूर कर दे Take away this weight from your आपका spirit. हाथ ऊपर कीजिए Raise your hand. और Raise your right कहिए, hand. और
जोर से कहिए, मैं इस बोझ को दूर करता हूं। And say after me, I take away this burden from मैं- me. और ये बोझ आपसे चला जाएगा। And now this burden has been lifted. आमीन, Amen. आमीन। Amen. उस दिन से मैंने तौबा की। And I ask for repentance to God. आप कोई छोटा बच्चा भी कलाम सुनाए, And you know what happens now if small children they ओ, preach the word. मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। I love them. ओ, मैं उसको अप्रिशिएट करता I हूँ। appreciate them. ओ, मुझे समझ आ गई है। Now I have understood. ओ, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूँ। I'm not better than others. ओ, अगर कुछ खुदा ने मुझे दिया है, And whatever God has given ओ, me, ये तो उसका फजल है। this is His ओ, grace. ये उसका फजल है। This is His ये grace. उसका फजल है। This is His grace. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, That's why I want to say, अपनी रूह को बोझल ना करें। don't make your spirit heavy. ना सिर्फ अपनी हर एक बोझ को, बल्कि ये भी लिखा हुआ है, गौर कीजिए जरा कलाम को, पढ़िए, सब निकालिए, प्लीज निकालिए। Let's read the word of God, not just the burden. Let's read the word of God. आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को, Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. ऐसा गुनाह जो आसानी से हमें उलझा लेता है। The sin that easily ensnares you. गौर से सुनिए, Listen carefully. हर एक की जिंदगी में In every person's life, कोई ऐसा गुनाह होता है there is kind of sin जो उसको आसानी से उलझा लेता है। that easily ensnares him or her. हर एक शख्स की जिंदगी में एक जैसा गुनाह नहीं होता, In every person's life, there is not same sin. और ये गुनाह फर्क फर्क है हर एक की And जिंदगी में। there are different sins in every life. और वो कभी कभी ऐसा गुनाह जो आप पर ओवरकम कर जाता है। And this kind of sin overcomes us easily. ओ, आप अच्छे भले खुदा में चल रहे होते हैं, Oh, you walk in God, ओ, लेकिन अचानक क्या होता है, फिर वो गुनाह आकर क्या कर लेता है। and suddenly that sin overcomes on you. क्या कोई ऐसा गुनाह है जो आसानी से आपको उलझा लेता है? Is there any sin that easily ensnares you? हो सकता है हर गुनाह आपको आसानी से उलझा ना सके, Yes, there can not be all sins that can ensnare you or trap you easily. लेकिन वन सिन, There सिर्फ can be एक one. गुनाह, There can be only one sin. ये सिर्फ एक गुनाह, There can be only one सिर्फ sin. एक गुनाह, Only one sin वो आपको आसानी से उलझा लेता है। that can ensnare you or trap you easily. मुझे पता तो नहीं है आपकी जिंदगी में क्या क्या है। I don't know about you what is there in your lives. हो सकता है जब मैं दुआ करूं तो खुदा खोल दे, And when we pray, it can be that God give word of knowledge. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं But I want to tell, कि सिर्फ एक गुनाह आपकी जिंदगी को कमजोर कमजोर करता जाता है। and only single sin that can make your life weaker, weaker and weaker. सिर्फ एक गुनाह, Only one, सिर्फ एक गुनाह, one sin, सिर्फ एक गुनाह one sin. आपकी जिंदगी को कमजोर 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 करता जाता It है। can make your life weaker day by day, weaker and weaker. वो आसानी से आपको उलझा लेता है। And it can ensnare you easily. हो सकता है वो गुस्सा हो, It can be a pride, or it can be your Angry. anger. एंगर। हो सकता है कई लोग जो है वो बहुत जल्दी एंगर हो जाते हैं। There are many people, they become angry on मुझे small मुझे things. यहाँ का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो है लोग नाराज बड़ी जल्दी जो हो जाते हैं। And in Pakistan, I don't know about you, but in Pakistan, people get angry very easily. उनको ये गुनाह जो है आसानी से उलझा लेता है। And this kind of sin ensnares us easily. वो अच्छे भले चर्च में चल रहे होते हैं, They walk in church and they come in church very, they do everything very. वो in a फिर good पता way. चलता है कि ये बंदा जो है वो नाराज हो गया है। And suddenly we come to know that this man is angry with pastor.
क्यों? Why? क्योंकि ये गुनाह आसानी से उन्हें उलझा लेता है। Because this sin ensnares them easily. एक बात मैं कहना चाहता हूं, One thing I want to tell. आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, Wherever you go in this world, कोई चर्च दुनिया में ऐसा नहीं है there is no any church in the world जब तक हम दुनिया में हैं, as long as we are in this world. चर्च में कई किस्म की जो है वो खूबियां होती हैं, In every church there are a lot of many kind of good things, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी भी होती हैं जो वीकनेस होती है। and even there can be some weaknesses also in every church. ओ मुझे बहुत साल हो गए हैं खुदा की खिदमत करते हुए, I have been serving God since many years. मैं हजारों चर्च में गया हूं, I have been to thousands of churches. लेकिन मैंने बहुत सी कन्वेंशनों का स्पीकर रहा हूं, I have been a speaker in many conferences and conventions. लेकिन मैंने एक चीज नोट की है, But I have noted one thing. हर चर्च में कोई ना कोई कमजोरी I होती have है seen even one or two or some weaknesses in everywhere. और कभी चर्च छोड़ के ना जाए Don't leave your place जहां खुदा ने आपको रखा है। wherever God has planted you. कभी कभी ये गुनाह हमें आसानी से उलझा लेता है। Many times this sin ensnares us easily. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता I हूं। want to give you one example. कितने नूह की कश्ती के बारे में जानते हैं? How many of you know the Ark of Noah? और नूह की कश्ती You can के raise your hand. में कितने जानवर थे? How many? There were many animals in the Noah's Ark. ओ नूह की कश्ती में शोर होगा, There, you could have seen there would be like noise, a lot of noise in that. ओ जब जानवर हों चीजें हों तो वहां डिस्टर्बिंग भी होगी। And you know, when there are animals, when there are people, when there are things, there would be disturbance also in that ark. लेकिन नूह की कश्ती एक चर्च की तस्वीर है। And the ark of Noah is a picture of a church. ये चर्च की तस्वीर है। This is a picture of a church. वहां तो डिस्टर्बिंग थी, There was disturbance. ओ वहां शोर था, There was noise. हो सकता है वहां बदबू भी हो। There was, it can be possible that there was a stench. लेकिन सुनिए गौर से, And listen carefully. जो लोग कश्ती के अंदर थे The people, those who were in the ship or in the ark, वो जिंदा थे, they were alive. लेकिन जो बाहर थे Those who were out of the ark, वो सब डिकन के मर गए। they all was drawn and they were dead. तो कलाम ये है, So the word of God for us is, जिंदगी चर्च में है, life is in the church. बरकत चर्च में है, Blessing is in the church. और जुड़े रहने में चर्च में है। And when we are connected with the और जो church, चर्च में रहेगा, or whosoever will remain in the मैं church, ये नहीं कहता कि चर्च में कमी नहीं हो सकती, I'm not saying that there cannot be flaws in the मैं church. ये नहीं कह रहा कि पास्टर भी को कमी नहीं हो सकती, I'm not saying that there cannot be weakness in the pastors. ओ लेकिन बरकत वहां ही है। But I'm saying that the blessing is in the church. आमीन Amen. आमीन। Amen. मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया I told you last time कि मेरा चर्च टूट गया था, that my church was broken. और मेरा चर्च बहुत बड़ा था, And my church was very big. और इससे दो हिस्से और बड़ा था। And the church was more, thrice with this church like. लेकिन वो Bigger. टूट गया, लेकिन वो टूट गया। But that was scattered. ओ मैं बिल्कुल जो है वो अकेला हो गया। I was alone. मुझे किसी ने कहा अपनी डिनोमिनेशन छोड़ दो। And somebody told me that leave your church, leave your denomination. एक डिनोमिनेशन मेरे पास आई, And one person came to me from another उसने कहा denomination. मैं आपको चर्च बना दूंगा, They said, we will build church for you. ओ आप हमारे साथ आ जाए। Oh, connect with us. बहुत Join दफा us. आपको कई किस्म की जो है वो आपके लिए अट्रैक्शन होगी। And you know, they will bring many incentive to you. Many times they will ओ मेरे attract पास भी you. आए। They also came to me. मैंने उनको कहा मेरा मरना जीना असम्बलीज ऑफ गॉड में है। And I told them that I will die and live in God only. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. आमीन। Amen. इसलिए जो लोग चर्च में रहेंगे, That's why those who will remain in the church. पता है मेरा चर्च कितने दिनों में कितने महीनों में बन गया?
And you know how in how many months my church was और rebuilt? पास्टर जेफ जो है वो हमारे चर्च में कलाम सुना Pastor के Jeff आए हैं। has come in my पास्टर church. चार्ल्स भी थे, Pastor Charles was with him. वो सिर्फ 6 माह में बन गया। Only 6 months took, and new building was made. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. आप कभी ऐसे गुनाह में ना पड़े जो आसानी से उलझा लेता है। Don't fall in sin that easily मैं ये कहना ensnares चाहता हूँ you. कि कई लोगों की तरक्की नहीं होती I want to tell you that many people those who are not succeeding in their life, और क्योंकि उनको गुनाह आसानी से उलझा ले, because easily they are trapped in the sin. और जब वो बढ़ना चाहते हैं, When they want to grow, और जब वो बढ़ना चाहते हैं, when they want to फिर वो succeed, गुनाह उनको पकड़ता है। suddenly sin come in their life, और उनमें से गुस्सा एक बहुत है, and from that is anger is one of और them. नाराज हो जाना बहुत है। And you know when you get angry with others, और चूंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, time is short with us. वो इसलिए मैं बहुत कुछ इसके बारे में नहीं कहना I चाहता। want to tell you more about तीसरी चीज third thing. लिखा है, आओ हम भी हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो में आसानी से उलझा लेता है दूर करके। And it says, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and तीसरी बात, दूर करके, that we should lay aside them. दूर करके। Lay aside them. ये दूर करके का क्या मतलब है? What does it mean to take them away from you? दूर करने का क्या मतलब है? What does it mean to take them away from you? ये लफ्ज वहां भी लिखा है जो यहां दूर करने के लिए लिखा है। The same word that is used here for to lay aside, जब मसीह को पकड़ने के लिए आए, when they came to arrest Christ, तो पतरस के हाथ में तलवार थी and there was a sword in the hand of Peter, और उसने एक के कान पर मारी। and he just cut the ear of one person तो with वो that जो sword. कान अलहदा हो गया था, दूर हो गया था, वहां भी लफ्ज यही इस्तेमाल हुआ है। And when that was cut from the body, the word that used there to cut that body from the ear was cut from the body, that is also used there, and the same word is used here, lay aside. तो क्या करना है? इसको, ऐसे गुनाह को, ऐसे बोझ को हमने काट डालना है। And we have to take away the weight or the sin that is in our life, cut from our किसी life. शख्स ने ये कहा है, Somebody has said this, कि हमारे पास पतरस जैसी तलवार होनी चाहिए। that we should have sword like Peter with us, वो दूसरों को कत्ल करने के लिए नहीं, not to kill others. अपना वो गुनाह और अपना वो बोझ जो आसानी से उलझा लेता है, हम उसको काट करें। To cut that sin or to cut that weight that is ensnaring us easily, Oh. to cut that, we need that sword in our life. ये खुदा ने नहीं काटना, God will not cut this. ये हमने काटना है, We will have to cut them. क्योंकि लिखा हुआ है कि इस गुनाह को दूर करो That's why it is written that जो आसानी से उलझा लेता है। lay aside the sin that easily ensnares you. मेरे बहनों और भाइयों, क्या My brothers आपके and पास ये sisters. तलवार है When you have this, do you have this sword? कि आप इसको, इस गुनाह को काट करें, या That- आप उसी गुनाह के साथ जीना चाहते हैं? Or do you have that sword to cut that sin, or you want to live in that sin? काट करें। Cut. मसीह ने कहा, Jesus said, अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए, if your eye हैं, ठोकर खिलाए, if your फैंस, if your eye offends you, हाँ, उसको निकाल दे। take it out. अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए, If your hand offends you, तो इसको काट दे। take it out, cut it out. लुंजा होकर जिंदगी बसर कर, काना होकर जिंदगी बसर कर, Live your life टुंडा like होकर जिंदगी this, बसर कर। without your hand, without your eye. क्या मसीह का ये मतलब था? Jesus wanted to say this? नो, No.
वो ये कह रहे थे कि हर वो गुनाह जो आपकी जिंदगी में है उसको काट डालो, ऐसे जैसे अज़ा कट जाता है। And he was saying that the sin, cut the sin from your life as you cut the body part from your life. अगर आप ऐसा करेंगे If you will do like और this, आपकी नजरें उस पर रहेंगी, and your eyes will be upon और Jesus, मैं आपको कहना चाहता हूं, I want to tell you, ऐसे शख्स किसी की तरक्की रोक नहीं सकते। nobody can stop your success. कोई आपकी तरक्की रोक नहीं सकता। Nobody will be able to take away your success. सिर्फ बोझ और गुनाह को दूर करो। Just remove the weight 5 मिनट मेरे रह and गए, remove the sin from your life. ओनली 5 Oh, 5 मिनट। Just 5 minutes. और आखिरी बात, Last thing. चौथी बात, Punch. चौथी बात Fourth thing. लिखा है, बस जब गुनाहों का इतना बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को, उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उसमें दौड़े, सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। And says, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. सब्र से दौड़े, Run with endurance. ये चीजें तो हमने काटनी है, We have cut those things. 3 चीजें हमने काटनी है। We have to cut 3 things. कौन कौन सी चीज काटनी है? Number 1, what is that? बोझ। We have to lay aside the weight. दूसरी चीज कौन सी काटनी Number है? 2, what? और Sin. तीसरा हमने सीखा कि हमारे पास तलवार होनी चाहिए जिससे हमने काट करना है। And third thing, we learned that we should have sword to cut. लेकिन चौथी चीज, And fourth thing is, सब्र से दौड़े। run with endurance. ये सब्र क्या है? What is that endurance? सब्र क्या है? What is that endurance? अच्छा, जो हम समझते हैं सब्र, हमारे पंजाबी जबान में कहते हैं सब्र शुक्र करके खा लो। And you know, in Punjabi, we say that just eat with thanksgiving and endurance. सब्र, बस सब्र। देखिए, लेकिन ये सब्र वो नहीं है। This endurance is not that one. ये सब्र वो नहीं है। Endurance is not that इस one. सब्र का मतलब ये है, This means ऐसे हालात, in all kind of situation, ऐसा प्रेशर, when you are under pressure, ओ आप प्रेशर में भी खुदा के साथ चल रहे हैं। and if you are under pressure, you still walk with God. इसको कहते हैं सब्र के साथ चलना। This is run with endurance. हो सकता है आपके ऊपर माली प्रेशर हो, It can be that you are under pressure because of finances. हो सकता है आपके पास जो है कोई बदनी बीमारी है, उसका प्रेशर हो। It can be because you are sick physically. That's why you are under pressure. हो सकता है आपके लिए कोई राह नहीं खुल रही, आप उसका प्रेशर हो। And it can be that the door is not being opened for you. That's why you are under pressure. खुदा का बंदा ये कहता है, The man of God says, ओ सब्र से दौड़े, इस that प्रेशर में भी सब्र से दौड़े, run with endurance. और सब्र से दौड़े। Run with endurance. आज लोग हमें कहते हैं पाकिस्तान में, In Pakistan, people say us now ओ ये बड़ा कामयाब पास्टर है, that he is very successful pastor. ओ ये बहुत कामयाब पास्टर है, Oh, he is very successful ओ pastor. कितनी दुनिया इसकी इज्जत करती है, Oh, many people they respect him. ओ इसको बाबा जी कहते हैं। And they say him old man, father. ओ लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, But I want to tell ओ you मैंने बहुत से प्रेशर में सब्र के साथ दौड़ा हूं। that when I was under pressure, I was enduring मैं that. आपको कहना चाहता हूं, I want to tell you, अगर आप सब्र से दौड़ेंगे, if you run with endurance, खुदा आपको कामयाब करेगा, God will bless you. आपके लिए हालात बदलेंगे, God will change your खुदा आपको कामयाब God will करेगा, make खुदा you आपके लिए successful. राहें खोलेगा, God will open और doors आप for ऐसा you. नहीं रहेंगे। And the circumstances will change. और मैं आपको बताना चाहता हूं, And I want to tell you, खुदा आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खोलने God will वाला है, open great door for you. और क्योंकि खुदा ने आपके लिए ये कर दिया है। And God has opened this for जब you. हम अगली दफा आएंगे, When we come next time, आपके मुंह में गवाही होगी, you will tell us लेकिन testimony. आपका ये काम है, But you do आप just one आप thing. सिर्फ सब्र से दौड़े, Just have patience and run with endurance. तो सब्र के साथ दौड़े रहना। Run with endurance. और जो लोग सब्र से दौड़ते हैं, Those who are running with endurance, प्रेशर में दौड़ना बड़ा मुश्किल है,
And you know, running, if you are under pressure and you're running, it is difficult. हो सकता है आपको चर्च से बरकत वो ना मिल रही हो, It can be possible that you are not getting हो blessing in सकता है your आपकी church. मर्जी के मुताबिक वहां काम ना हो रहा, It can be possible that the work is not being done in the church as you are expecting. लेकिन आप चलते रहे सब्र के साथ। Just run with endurance. क्या आपको याद है कि खुदा ने इसहाक से कहा था, Do you know? तू जरार में रह, यहां बीज बो, मैं तुझे वहां 100% दूंगा। And you know that God spoke to Isaac and said him that you just stay here, plant your seed here, I will give you 100% fruit. तो जब हम सब्र से दौड़ते हैं तो खुदा हमें कामयाब करता है। When we run with endurance, God blesses us and make us successful. और मेरी दुआ है खुदा आपको कामयाब करेगा। And this is my prayer that God will bless you and make you successful. आप इन चीजों को दूर कर दें And you lay aside the burden. और खुदा आपको कामयाब And करेगा। God will make you successful. और मैं कहना चाहता हूं, And I want to tell you, मैं कहना चाहता हूं, I want to tell, मैं अपनी रूह में ये फील करता हूं, I feel in my spirit, आपका चर्च ऐसा नहीं रहेगा, इसमें बहुत सी तरक्की होगी। I feel in my spirit that your church will never same again. We will see a great success in this church. खुदा ये काम करेगा, God will do this. खुदा ये काम करेगा। God will do this. और मैं आप सबको कहना चाहता And हूं, I want to tell you all, आप यहां टिके रहें, you remain here. तो आप जहां टिके रहें। Just remain where you are planted. मैं खुदा का बंदा हूं, I'm man of God. जो मैं कह रहा हूं, And whatever I'm saying, मैं जो कह रहा हूं, whatever I'm saying, अगर आप टिके रहेंगे, if you remain here where you are planted, प्रेशरों में टिके रहेंगे, during pressure, मुश्किल में टिके रहेंगे, during difficulty, और आप कामयाब हो जाएंगे। and you will be successful. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. तो आप सब्र के साथ एक जगह पर टिके रहे। And just endure and be patient and stay here. मेरा टाइम खत्म है, Wow, the word time is finished. टाइम इज फिनिश। घंटा हो गया। Hallelujah. आमीन, Hallelujah. आमीन। आप में से कितनों ने बरकत पाई है? How many of you are blessed today? मेरे पास आप कईयों के लिए खुदा का कलाम है। God has given me word for you all. अभी हम many जब of you. भाई जेफ हमें टाइम देगा तो हम आपके लिए दुआ When करेंगे। Pastor Teff will give us time, we'll pray for you. We can continue. We can continue pray. प्रे Yes. आए अपने कदमों. Let's आए, stand on our अपने feet. पांव पर खड़े हो जाए। And those who want to be prayed, they can come forward. ओ Let's start शबका praying. नरा तारा Open our बाका नारा heart. शबका तारा Rabba बाका। kada razoko क्या आपकी tobo. रूह तरक्की करना चाहती है? Or do you? कितनों की रूह तरक्की करना चाहती है? Do your spirit want to be successful? क्या आप रूहानियत पे बढ़ना चाहते हैं? Spiritually, you want to grow. अपना हाथ खड़ा If कीजिए। you want to grow spiritually, you can raise your hand. आओ अपना हाथ खड़ा If कीजिए। you want to grow spiritually, raise your hand. हम आपकी मदद करना चाहते हैं। We will pray for you and help you. हम आपकी मदद करना चाहते We हैं। will want to help you. प्लीज Come आगे आ forward. जाइए। Those who want to grow Please, spiritually, आगे आ come जाइए। forward. Those who want to grow spiritually, come forward. आ जाइए आगे। ईमान के साथ, ईमान के साथ, Come in faith. ईमान के साथ आइए। अगर आपके अंदर ये बात है If it is in your heart, कि आपके साथ खुदा ने कलाम किया है, God has spoken to you. आपके साथ खुदा बोला है, God has spoken to you. ओ तो आप आगे आ जाइए। Come forward. ओ रशबे का तरबा काला रशे का रबा इंदर बगल रशे बेगल रतरबा इंदर बगल रतरबा